Hello students, myself Bhagyashree and welcome back to the lecture number 2 of cell division. So in today's lecture we will see about the mitosis, the process of mitosis. जो हमारा first lecture था वहाँ पे हमने क्या देखा? Introduction of the cell division. What is cell division? What are the types of cell division? What is the significance of the cell division? तो cell division के कितने types हैं? दो type. First one is the mitosis and second one is meiosis. So in today's lecture, we will see about the process of mitosis in detail, and this topic is very important in state board examination. It can be asked for the 5 marks. Okay, so let's start. Okay, so माइटोसिस स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल जो हमने लोअर स्टैंडर्ड में देखा था. तो आज हम बस कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने वाले हैं जिसके अंडरस्टैंडिंग से हमें माइटोसिस एंड मेयोसिस अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो सेल आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन. ये कौन सी सेल है? प्लांट सेल है? एनिमल सेल? यस, दिस इज अ एनिमल सेल. एंड inside the cell, inside the center of the cell there is the presence of nucleus. ठीक है, तो आपको ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये क्या है? न्यूक्लियस है. The outer membrane of the nucleus is known as nuclear envelope, and inside the nuclear envelope there is the presence of what? There is the presence of DNA. So the DNA हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो डीएनए है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, लाइक दैट. अब ये क्या है? डीएनए the length of the DNA is too much, so to fit inside the nucleus there should be the process of condensation. तो क्या होता है? ये जो DNA it will get condensed, you can see here it will get condensed and a thread like structure is formed which is known as a chromatin. So inside the cell, inside the nucleus, inside the nuclear envelope, DNA is present in the form of thread like structure known as a chromatin. ठीक है, so a chromatin you can see here, that is a thread like structure. Outer structure is nuclear envelope and another structure is present inside the nucleus. You can see this is a nucleolus. क्या है? न्यूक्लियोलस है, which is very important for the formation of the ribosomes and the other cell activities. ठीक है, now so let's see about the process of mitosis. Mitosis क्या है? Mitosis is the type of cell division in which one parent cell divide into genetically identical daughter cells. ठीक है, तो you can see here one diagram is there. ये क्या है? एक सेल है. The main cell is known as a parent cell, जिसके अंदर सेल डिवीजन होने वाला है, that is the parent cell. And after some stages one parent cell get converted into the two cell known as a daughter cell, and that is nothing but the mitosis. So यहाँ पे आपको फोकस क्या करना है? One parent cell divide into two genetically identical daughter cells. ये जो डॉटर सेल्स है ये क्या है? जेनेटिकल आइडेंटिकल. मतलब क्या? दोनों में डीएनए का नंबर, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा? आइडेंटिकल होगा, एंड दैट इज नथिंग बट द माइटोसिस. अब यहाँ पे माइटोसिस होने के लिए one parent cell has to convert into the two parent cell, and for that purpose mitosis has a two stages. One is karyokinesis, another one is cytokinesis. You can see here ये जो सेल है in first two stages, inside the cell ये जो क्रोमोसोम है उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, and that chromosome कहाँ पे प्रेजेंट है? दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ द माइटोसिस इज नथिंग बट द karyokinesis, means what? Division of nucleus. And the second stage is nothing but the cytokinesis, means what? Division of cytoplasm. So we will see it in detail. Okay, so karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis is further divided into four stages: prophase, metaphase, anaphase, telophase, and cytokinesis it is itself another stage. तो karyokinesis में क्या होगा? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. डिवाइड, सेल को डिवाइड होने के लिए दो स्टेजेस है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट वन इज karyokinesis, मतलब क्या? जो न्यूक्लियस है, जो क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट होंगे, एंड सेकेंड वन इज द cytokinesis.
सो लेट्स स्टार्ट द कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस के अंदर जो फर्स्ट स्टेज है वो कौन सी है? दैट इज द प्रोफेज. प्रो मीन्स फर्स्ट, विच इज द इनिशियल फेज. ठीक है. सो प्रोफेज में क्या होगा? यू कैन सी इन द डायग्राम, जो क्रोमोसोम्स थे वो क्या हो गए? कंडेंस हो गए, वो सेपरेट हो गए. ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? 46. फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हमने क्या किया? सिर्फ 4 क्रोमोसोम्स लिए. 4 क्रोमोसोम्स मतलब कितने पेयर्स हो गए? 2 पेयर. वन इज शोन इन ब्लू कलर, अनदर इज शोन इन रेड कलर. सो प्रोफेज में क्या होगा? जो क्रोमैटिन थे दे विल स्टार्ट टू कंडेंस, उनका और ज्यादा कंडेंसेशन होगा. कंडेंसेशन मतलब क्या? वो और ज्यादा क्लोज आएंगे एंड इट विल फॉर्म अ क्रोमैटिड स्ट्रक्चर. यू कैन सी इनके जो क्रोमोसोम्स हैं ये हमें क्लियरली विजिबल होंगे प्रोफेज में. सेकेंड थिंग हमने क्या देखा था? सेंट्रियोल. जो फर्स्ट डायग्राम हमने देखी थी वहां पे सेंट्रियोल, एक ही सेंट्रियोल प्रेजेंट था. प्रोफेज में क्या हो रहा है? डिवीजन ऑफ द सेंट्रियोल, राइट. एंड यू कैन सी यहाँ पे एक न्यूक्लियर एनवेलोप प्रेजेंट था. यहाँ पे आपको न्यूक्लियर एनवेलोप प्रेजेंट नहीं है, मतलब दिखाई दे रहा है. व्हाई? बिकॉज इट इज स्टार्ट टू डिसअपियर. तो क्या क्या होगा प्रोफेज में? कंडेंसेशन ऑफ thin thread like chromosome start. Second, chromosome become short and thick and they start to appear along with the pair of sister chromatid. सिस्टर क्रोमैटिड, इसका सब हमने इंट्रोडक्शन में कवर किया है. सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है. नेक्स्ट, centrioles start to duplicate and each centriole moves to opposite pole of the cell. ये जो centrioles है वो क्या हो गए? They will move to the opposite pole of the cell and nuclear membrane and nucleolus start to disappear. So यहाँ पे जो nucleolus था, nuclear membrane था, ये क्या हो गया? It will start the disappearing. So this is about the prophase. Next stage is the metaphase, which is the second stage and which is very very important. प्रोफेज में क्या देखा हमने कि ये जो क्रोमोसोम्स थे ये कहीं पे भी थे, राइट. इन मेटाफेज क्रोमोसोम अलाइन एट अ वन प्लेन. ये जो प्लेन है दैट इज नोन एज इक्वेटोरियल प्लेन and it will start align at a equatorial plane. Again centriole finally move to the opposite pole. तो सेंट्रियोल क्या हो गए? अपोजिट पोल में मूव हो गए and there is the complete formation of the spindle fibers. So you can see here is a blue line is there. So ये जो blue thread like structure आपको दिख रहा है that is the spindle fiber. What are the spindle fiber? These are the protein structure which is helpful for the division of the chromosomes. ठीक है. So centriole duplicate हो गए, spindle formation भी start हो गया. So you can see nuclear membrane completely disappear, chromosomes complete their condensation and become clearly visible along with sister chromatid. So exam में ये statement आएगा, fill in the blanks में आ सकता है, revision में आ सकता है and you have to explain that statement. So chromosome कौन सी stage में completed their condensation? In metaphase and they are clearly visible along with their sister chromatid. Next, all the chromosomes are arranged parallel to the equatorial plane. So equatorial plane means what? It is a central plane. You can see this, all the chromosomes are parallel to each other. So one cell has how many chromosomes? 46 chromosomes. So यहाँ पे क्या होगा? जितने भी chromosomes है they will become parallel. ठीक है. And last one, special type of flexible protein fibers are formed between the centromere of each chromosome and both centriole. So यहाँ पे क्या होगा? Centriole से spindle fibers आएंगे and they will get attached to the centromere of the chromosome. Next one is the anaphase. Anaphase में क्या होगा? जो क्रोमोसोम्स है अब these chromosomes start to get separate from the each other. कैसे? तो spindle fibers क्या करेंगे? They will move the chromosome to the opposite pole. एक दूसरे से opposite move करेंगे and that's why there is a separation of the chromosome. So centromere split and sister chromatid of each chromosome separate and they are pulled apart in opposite direction with the help of spindle fibers. Spindle fibers की मदद से ये जो chromosomes है they will move apart in opposite direction. Chromosomes you can see अब
ये कैसे दिख रहे हैं? लाइक अ बंच ऑफ बनानास. दिस कैन बी आस्क्ड फॉर द 1 marks or the 2 marks. Explain the statement. Separated sister chromatid are now known as daughter chromosomes. ठीक है, अब ये chromatid क्या हो गए? Separate हो गए. In this way, each set of chromosome reach at opposite pole of the cell. Next one is the telophase. So, telophase में क्या होगा? ये जो chromosomes है, ये opposite daughter chromosomes form होंगे. Now, there is the restart. There is the reformation of the nuclear envelope, centriole. So the chromosomes which have reached at opposite pole of the cell now start to decondense, due to which they again become a thread like thin and invisible. अब ये क्या होगा? डिकंडेंस करना स्टार्ट करेंगे. मतलब पहले कंडेंस थे, अब डिकंडेंस हो रहे हैं. सो दे विल कन्वर्ट इनटू द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. Another thing, they will start to invisible. यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, you can see it is also start free formed. So it is reformed and thus two daughter nuclei. So this is a one cell, and the one cell has how many daughter nuclei? They have the two daughter nuclei are present. So chromosome decondense, nuclear membrane reforms, and chromosomes यहाँ पे दोनों भी decondense हो गए, and there is the formation of two daughter nucleus. One more thing, you can see here spindle fibers anywhere? No. So यहाँ पे spindle fibers नहीं होंगे. Spindle fibers completely disappear. So there is the completion of the karyokinesis. Karyokinesis में क्या होगा? Division of nucleus, and though there is the formation of two daughter nuclei. अब karyokinesis हो गया, अब क्या होगा? Cytokinesis. न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा? डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. कैसे होगा? So there will be the formation of cleavage furrow, and there is the formation of identical daughter cells. So you can see ये जो सेल है, ये जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे एक क्लीवेज फॉर्म होगा and दो daughter cells form होंगे. So the cytoplasm divides by the cytokinesis, and two new cells are formed which are called as daughter cells. In this process, a notch is formed. Notch, cleavage, both are the same thing, at the equatorial plane of the cell, which depends gradually, and thereby two cells are formed. In case of plant में क्या होता है? Cell wall present होती है. So cell wall present है, that's why there is the point बहुत important है. Instead of notch, a cell plate is formed exactly along midline of the cell, and thus cytokinesis is completed. So वहाँ पे क्या होगा? एक cell plate form हो गया. For example, this is a plant cell. So it is have a cell membrane. So यहाँ पे क्या होगा? There is the formation of a cell plate. एक plate like structure form होगा, and बाद में यहाँ पे दो cells क्या हो गए? Divide हो गए. So here we completed the stages of the mitosis, karyokinesis and cytokinesis. Now we will see the significance of the mitosis. Mitosis, why there is a need of mitosis? So there are three reasons. First one is the growth of organism. Organisms की growth मतलब क्या? हाइट इंक्रीज होगी. हाइट इंक्रीज करने के लिए वहाँ पे क्या होना चाहिए? सेल डिवीजन होगा. कौन सा सेल डिवीजन होगा? माइटोसिस. वाई माइटोसिस? बिकॉज द फॉर्म सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. Because form cells are genetically identical, equal cells form होंगे, right? So mitosis another reason क्या होगा? कि सेल का नंबर इंक्रीज होगा. ठीक है. एंड अनदर थिंग इज, जब कोई जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्मेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए तो मियोसिस होगा, बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट देयर शुड बी द डेवलपमेंट, ग्रोथ इन द फर्टिलाइज्ड एग. ये भी क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द माइटोसिस. सेकेंड, रिपेयर एंड हीलिंग. रिपेयर एंड हीलिंग. सो वॉर्न आउट है, डैमेज है, डेड सेल्स है, उनको अगर रिप्लेस करना है, स्किन सेल्स को रिप्लेस करना है, ब्लड सेल्स को फॉर्म करना है और रिप्लेस करना है, उसके लिए भी कौन सा होगा? माइटोसिस. एंड थर्ड वन इज द रिप्रोडक्शन. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द माइटोसिस. वहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी? माइटोसिस. सो आज हमने क्या देखा इन डिटेल अबाउट द माइटोसिस. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप आपको माइटोसिस टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.